Yes, good evening, everybody. And I'm sorry yesterday, because of my mistake, I'm not able to read the SMS properly and I couldn't take over your lecture because it was scheduled at 5 o'clock, but I read it at 6 o'clock. And so I couldn't log into the lecture. So I'm sorry for that. Today we'll continue with the topic, that is electrochemistry. Let's have the recap of the topic, what we have seen till date in electrochemistry. As we have seen, electrochemistry is the chapter which is a theoretical chapter, which mathematical concepts are given over there. And though it's a bit lengthy chapter, it's having the moderate or easy concepts. And it is related with our daily routine life. So this chapter has again 3 sections. Section 1 is dealing with introduction of the fundamental concepts in electrochemistry. Middle section is concerned with the core concept of electrochemistry, and third section is dealing with the applied part of this electrochemistry, applications of electrochemistry. In first part, what we have seen, electrochemistry, the chapter which is related with the energy, where we discuss, according to the law of conservation of energy, one form of energy can be converted to another form, but energy can neither be created nor be destroyed. So in electrochemistry, we are dealing with conversion of chemical energy into electrical one and electrical energy into chemical one. And for this conversion, we need a device. And we know it very well. We have electrolytic cell, or you can say simply electrochemical cell. Electrochemical cells are of again 2 types. That is, you can say electrolytic cell and galvanic cell. Now, before entering into the details of these cells, we have seen some fundamental concept. That is, what is the conductance? The charge transfer from one point to another point is called as a conduction. And this conduction may take place by with the help of electrons or with the help of ions. If the charge transfer with the help of electrons, it's called as your electronic conductance. And whenever charge transfer occur with the help of ions, it's called as electrolytic conductance. We have also seen what is conductance G, what is conductivity K, what is resistance R, what is resistivity rho, and relation between them, that's also what we have discussed. Then we have seen these concepts are not sufficient or right concept for the chemistry, because in chemistry we are not dealing with electronic conductance, we are dealing with electrolytic conductance, that is the conduction with the help of ions. Or whenever we have the ions, we have the solutions, we have the chemicals, that means we should have some different concepts. And then we have the concept called as, you can say, molar conductivity. So whenever any 1 mole of substance is dissolved into the given amount of solvent, or especially 1 liter of water, that becomes a 1 molar solution. And whatever the conductance shown by that solution is called as molar conductance. So molar conductivity is a term that is denoted by lambda. We have seen that. Then also we have seen substances are of 2 types. There is electrolytes are 2 types, that is strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolyte dissociate completely, whereas weak electrolyte dissociate partially. And based on that, all strong electrolytes dissociate completely. Whatever the 1 mole, 2 mole we have taken, they dissociate completely and produces the maximum number of ions. And if they produce the maximum number of ions, then it shows the maximum molar conductivity, that is lambda naught. So that is the maximum molar conductivity. We have seen the mathematical part and as well as theoretical part for both of them. That is, what is molar conductivity, what is maximum molar conductivity, and what is the relation between them. But in case of weak electrolyte, they dissociate partially, and their dissociation depends upon the dilutions. So if we go for the infinite dilutions, then and then only all the ions will dissociate and will produce the maximum ions. But in order to go to the infinity, it's difficult. So to calculate the molar conductance of weak electrolyte is difficult. So Kohlrausch is the scientist who has introduced his law, that is Kohlrausch law. So according to Kohlrausch law, when weak electrolyte dissolves to water, it electrolytes, similar with cations and anions, migrate independently and contributes to the total molar conductivity. And by using this, we can calculate the molar conductivity of any of the electrolytes, or also when we discuss the applications of this Kohlrausch law, if the molar conductivity of 3 to 2 substances, even the 2 to 3 substances is known, and the 4th substance having the common ion size like a 3-1, either earlier 3-1, we can calculate its molar conductivity. So that is the application. Also, we have seen the relation between molar conductivity and degree of dissociation. Also, we have seen what is the conductivity cell, construction, working of conductivity cell, or we have seen K is equal to B upon R. So also we have seen Wheatstone principle in order to measure the resistance, and we have calculated the conductivity. That is the first section of the chapter which is dealing with the introductory part. When we enter into the
second section of the chapter, where we are dealing with electrochemical cell, which divide into electrolytic cell and galvanic cell. So in last lecture, we have discussed electrolytic cell. It is the cell in which electrical energy is converted to chemical energy, and we have seen the related topic for that. So we have seen construction and working of electrolytic cell. We have also seen what is electrolysis. Whenever the non-spontaneous reaction is carried out, by supplying external electric current, then that is called, you can say, electrolysis. And this is nothing but the principle of electrolytic cell, what we have seen. Going further, also we have seen that is when the electrolysis of aqueous NaCl is being carried out, gives the different product, or whenever electrolysis of fused NaCl is carried out, it gives a different product. So we have seen the reactions and everything related with that. Furthermore, also we have seen the quantitative aspects of this electrolytic cell and related concepts. वो भी हमने उसके अंदर discuss कर दिया. Then last lecture में हमने discuss किया था, start किया था galvanic cell के साथ. तो शायद आपको याद आता होगा what we have seen here in the galvanic cell. Just a second, where is the pen? Okay, I got it. So we have seen construction working of galvanic cell. Galvanic, you can say Gallian, or you can say voltaic cell. Voltaic cell. इसके अंदर number 1 आता है, that is you can say construction. Number 2 आता है, that is you can say working. Number 3, it's observations in the cell. जिस तरीके से वो आते हैं वो हमने देखा. So last time हमने cell का diagram draw किया था. मैं भी diagram draw करना चाहूँगा. See, this is the first container. We are here. This is another container we have here. Now this first container is filled with मेरे ख्याल से हमने जिंक सल्फेट से लिखा था, so ZnSO4. So ZnSO4, and this is filled with CuSO4, that is CuSO4 solution, copper sulfate solution. Zinc rod is dipped in this container, or copper rod is dipped in this container. So this is zinc rod and this is Cu rod, and this is connected to आपके बुक के हिसाब से डायग्राम निकालेंगे like this one. इस तरीके से है, और यहाँ पे जो है that is you can say galvanometer है जो इस तरीके से है. So ये है galvanometer, और here we have the salt bridge. Here we have salt bridge instrument. So this is the salt bridge. यहाँ पे bottom is black, और इसके अंदर हम लोगों को ये मिल जाता है. ठीक है? So like this. This is what. So this becomes negatively charged and known as anode, and this becomes positively charged and known as cathode. So this is the construction of the cell what we have seen in the last lecture. Last lecture में draw किया था मैंने, समझाया भी था. फिर वापस एक बार रीटेक कर रहा हूँ क्योंकि उसी के साथ कुछ बहुत सारे टॉपिक अभी जुड़े हुए हैं. Now देख रहे हैं हम लोग कि what is the construction? Construction में what we have seen, there are two containers. First container we are filled with zinc sulfate solution, another container filled with copper sulfate solution. Then this zinc rod is dipped in zinc sulfate solution, copper rod dipped in the copper solution, मतलब particular metal in its own ion solution, and this is the salt bridge, and this is connected to galvanometer, or you can say to the bulb. This is the construction. While working, this copper has a tendency to dissolve or dissociate. So copper goes into the solution, gas in the reaction. So this copper, मतलब first reaction at anode. Anode की reaction क्या होता है? तो this zinc, ये जो zinc का plate है, this zinc plate goes into the solution to produce Zn++, and electrons are left behind. Be clear नहीं है? ये जो zinc plate है, ये dissolve होता है. तो इसके जो ions है, वो solution में Zn+ के format पे चलते हैं, और इसके ऊपर negative electrons यहाँ पे रहते हैं. तो Zn goes into the solution to produce Zn++, plus 2 electrons are left behind on the metal plate. Or because of these electrons, this metal plate becomes negatively charged. And this is called as an anode. Why this is called as an anode? Because this is the loss of electron. The loss of electron is called as an oxidation process. So here is the oxidation process. Or according to fundamental definition, what is anode? Anode is the electrode where oxidation takes place. Anode is the electrode where oxidation takes place, or cathode is the electrode where reduction takes place. So that is what we can have. Then at the same time, when we talk about another reaction at cathode, so at reaction, second reaction at cathode is this. Cathode is this because the electron travels through external circuit
and is received here by this copper. So this CuSO4 dissociate to produce Cu++ plus SO4 minus minus. इसके अंदर Cu++ ions है. This Cu++ ions will go to this and they will receive these electrons. So here Cu++ ions will receive these electrons and form Cu. So this reaction is nothing but the reduction reaction. So या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं at cathode there is a reduction. So cathode electrode को वही reduction ही होता है, मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसी को कैथोड कहा जाता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. नहीं तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार इलेक्ट्रोलिक सेल में कुछ अलग नोटेशंस है और गैल्वेनिक सेल में कुछ अलग नोटेशंस. तो नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज विद दिस वन. एज आई स्टेटेड, this is anode and this is cathode. Anode is the electrode where oxidation takes place. Cathode is the electrode where reduction takes place. And the overall reaction, this is oxidation half reaction after this electrode. This is reduction half reaction with the other side. This electrode, and this is called as a half cell. This is called as another half cell. And the overall reaction is तीसरा part. Overall reaction is overall reaction कैसा होगा? Zn gives you Zn plus 2 electrons here. Cu++ receives 2 electrons to produce Cu. So this is, you can say, oxidation. This is, you can say, reduction. And overall reaction electron got cancelled. Zn plus Cu++ gives you Zn plus Cu. And this is nothing but the redox reaction. Overall reaction is always a redox reaction because it's this zinc is going for oxidation and copper is going for reduction. And this is overall reaction in which electrons do not appear. So zinc और copper, यहाँ पे copper के ऊपर charge है, product में this charge is separate to zinc. इसी को तो हम conductance कहते हैं. Conductance is a charge transfer. Charge transfer होता है copper to zinc. Reactant में दिखता है charge copper के ऊपर, zinc के ऊपर नहीं है. और product में दिखता है कि charge zinc के ऊपर है, copper के ऊपर नहीं है. That is what we can say. So this is the way how we can have. This is the working of this cell. Now, when we talk about the observations of this cell. दो तीन ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा. Number one, this is the electrode which is copper dissolves in aqueous solution or here in this zinc sulfate solution. So this electrode dissolves continuously, keeping behind the electrons, and that's why it becomes negatively charged, called as an anode. Whereas this electrode, copper Cu++, which is here, which deposits on this metal fraction, becomes positively charged. So this is called as a cathode. Now, when this molar concentration taken 1 mole, this cell produces 1.1 volt. इतना पोटेंशियल इस सेल के अंदर तैयार होता है. So we have construction of the cell, we have working of the cell. This is called as galvanic cell. Now इसी सेल के साथ काफी सारी चीजें जुड़ी हुई है. सबसे पहले आता है कि this is the diagram of the cell. इसी डायग्राम को, इसी सेल को सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. This cell can be presented by a very simple way or simple manner. So there is a cell representation. अब देखिए इस सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है और सेल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रिएक्शन होता है. तो मैं सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाता हूँ. सो here we'll represent the cell. The short way to represent the cell, this is zinc copper cell. ये जो है, this is nothing but the zinc copper cell. तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसका here? This is zinc which is solid, single vertical line, Zn++ aqueous 1 molar ब्रैकेट में डबल वर्टिकल लाइन Cu++ aqueous 1 molar single vertical line Cu solid. So this is the short representation of the cell. This is the very short representation of the cell. तो समझ में आ रहा है आपको कि ये जो जिंक कॉपर सेल है, अलग अलग टाइप के सेल हो सकते हैं. जिंक कैडमियम सेल होता है, निकल कैडमियम सेल होता है, देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सेल हो सकता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हाट वी कैन प्रिपेयर. आई हैव टेकन फॉर एग्जांपल जिंक कॉपर सेल. आपकी बुक में शायद एग्जांपल अलग हो सकता है. निकल कैडमियम सेल का एग्जांपल है, एज वेल एज यू कैन से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है. तो यू कैन रेफर टू एनी ऑफ द एग्जांपल, बट द सेल रिप्रेजेंटेशन इज दिस वे. अभी इसके अंदर देखिएगा, ये जो सेल है, ये सेल का ये रिप्रेजेंटेशन. तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ विल रिप्रेजेंट द सेल. तो सेल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, उसके पीछे कुछ रूल्स आते हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से वो रिप्रेजेंटेशन होता है. तो क्या है देखिएगा, दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे है, दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर है, दिस इज Zn++ जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, यहाँ Cu++ जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में है. दिस रिप्रेजेंट एक्वियस, दिस इज 1 मोलर कंसंट्रेशन.
This is again 1 molar concentration. Single vertical line, double vertical line and single vertical line. So हर चीज का इसके अंदर मीनिंग होता है, हर चीज का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है. तो क्या इंटरप्रिटेशन है अब देखिए. सबसे पहली बात आती है दिस इज जिंक रॉड and this zinc solution. So zinc is nothing but this zinc rod and Zn plus is nothing but the solution. So this single vertical line indicates the separation between zinc plate and zinc solution. देखिएगा, single vertical line indicates the separation between zinc plate and zinc solution. So there is a phase difference. This indicates. Double vertical line indicates salt bridge. जो ये दिखता है. So this one is the salt bridge. So this salt bridge is denoted by double vertical line. तो इस नोटेशन के अंदर डबल वर्टिकल लाइन मींस इट इज अ सॉल्ट ब्रिज व्हिच कनेक्ट्स बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस. तो ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने वाला ये सॉल्ट ब्रिज आपको यहां पे दिखाया है. देन द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. हमने देखा है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, यहां पर. दिस इज द ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और जहां पे रिडक्शन होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है. So the electrode where oxidation takes place is always written on the left hand side and the electrode where reduction takes place should be written on the right hand side. ये भी उसके अंदर की important बात है. Lot of information regarding all this has to be mentioned as like solution is aqueous to the right suffix, having a concentration 1 molar, aqueous having concentration 1 molar. That has to be referred. And one more important thing that electron always move from electrode to reduction. मतलब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड टू रिडक्शन इलेक्ट्रोड. सो ये देखिए ना इसके अंदर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यहाँ आ रहा है. सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं. सो दिस इज यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन लाइक दिस वन. इस तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है. दिस इज माइनस. सो इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरीके से दिखाई देता है. सो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट. अपर पार्ट इज एक्सटर्नल सर्किट, ये पार्ट इज द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल. दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन. And this cell representation is according to the rules. देखिए ये जो सेल लिखा है ना, ये रूल्स के हिसाब से लिखा है. वन सेकंड में बताऊंगा. ये शॉर्ट वर्ड में LOAN इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. शॉर्ट तरीका है LOAN. इसका मतलब क्या होता है? When we talk about the LOAN, then this L represents left side. L represent left side. O represent oxidation. A represents anode and N represents negatively charged. तो ये लोन एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड के साथ निमोनिक है, उससे हम लोग याद रख सकते हैं. सो दिस L represent the left hand side, O represent the oxidation, A represents the anode and N represents the negatively charged electrode. That means he's here in this cells left side में हमेशा वो इलेक्ट्रोड लिखा जाता है which where oxidation takes place, it is called as an anode and this is always negatively charged. So cell representation के अंदर हम जो बात कर रहे हैं when we talk about the cell representation, the left side electrode is always electrode where oxidation takes place. We have taken a zinc. Then the electrode where reduction takes place should be taken on the right hand side. And then the single vertical line indicates the phase separation. That is, this metal plate is in contact with its aqueous solution. This single vertical line also indicates the phase separation. This metal plate is in contact with this aqueous solution. Double vertical line indicates the salt bridge. This is the salt bridge which separate this both of the solutions but maintain the electrical contact between them. And lot of information like aqueous solutions concentration has to be mentioned into the square brackets wherever they are. So this is the cell representation. तो ये cell representation. अभी एक ही सेल के साथ this is the galvanic cell. Galvanic cell के साथ काफी सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स रिलेटेड है. तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, फिर देखा हमने वर्किंग ऑफ द सेल, दैट इज द रिएक्शंस. And then we have seen cell representation. This is called as cell representation. Galvanic cell हो, Daniel cell हो, voltaic cell हो, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? That is what we have written here. यहाँ पे हमने लिखा है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. अभी कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और उसके आधार पर रिएक्शन पूछा जाता है. ये रिएक्शन. और कभी-कभी रिएक्शन दिया जाता है और उसके आधार पर सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है. सो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो on the basis of reaction we can write a cell reaction, or on the basis of cell reaction we can write a cell representation, we can write a cell reaction. So this is what we can say. We have that. So अब देखिए इसके आधार पर सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग. तो इसके आधार पर सेल रिएक्शन लिखने का तरीका ये है, this is the electrode who is going to oxidize. जिंक को ऑक्सीडेशन ही होना है, तो this zinc goes for oxidation
to produce Zn++, और Zn++ ये zinc का valence है. Zinc has a valency 2, so zinc can lose maximum 2 electrons. So zinc loses electron to form Zn++. Copper has a valency +2, it gains electron to produce CO. So ये इसके अंदर आ जाता है. So इस तरीके से we can say here loss of electron, gain of electron इस तरीके से आ जाता है. So that is what we can say. Cell representation is cell reaction और cell reaction से cell representation की दोनों तरीके इसके अंदर आ जाते हैं. Clear with this? Now we have to go ahead for the salt breach or potential के बारे में हमें move करना है. Also, there is any doubt to anyone? Okay. Now, let's move to salt breach. Salt breach. तो ये जो salt breach हमें दिखाई दे रहा है, that is what we are seeing here. This is the name of the salt breach. Okay. अब देखिएगा, salt breach is what? Salt breach का एक बार हम लोग diagram draw करते हैं. So this is the diagram of salt breach, which is a U-shaped glass tube. जहाँ पे यहाँ पे cotton plug किया गया है. So cotton is plugged at both ends, and this is filled with a suitable electrolyte solution. So this is filled with suitable electrolyte solution. Okay. So it is a U-shaped glass tube, and it is filled with a suitable electrolyte solution. तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? We can have KCl, we can have NaCl, we can have ammonium nitrate, we can have sodium nitrate, we can have agar-agar solution, we can have silica gel, like that. There are different electrolytes. कोई भी है क्या? सारे at a time नहीं है. The choice of this electrolyte depends upon the substances taken here. यहाँ पे substances कौन से लिए हैं, इसके आधार पर उसका choice depend करता है कि हम इसके अंदर क्या लेंगे. So that's why the choice of electrolyte depends upon the chemical substances what we have taken here. So उसके ऊपर depend करता है. That is what we can see here. Salt breach. So this is the construction of the salt breach. Now, what are the functions of salt breach? ये salt breach के functions क्या होता है? ये important है. This is the construction of salt breach. Now, what are the functions of this salt breach? So, number one, this salt breach maintains electrical contact between both the solutions. दोनों solution में electrical contact के salt breach maintain करता है. Number one. Number two, it avoids the mixing of two solutions. दोनों solution का mixing को avoid करता है. It avoids the mixing of two solutions. दोनों का avoid करता है. Next, it avoids the potential junction. Potential junction avoid करता है. मतलब potential junction जो होता है उसे वो avoid करता है. And ions can freely move through this salt breach. Ions can freely move through this salt breach. While putting the salt breach, care has to be taken. Both ends must dip into the solutions. कभी-कभी ये end अगर solution के ऊपर रहेगा तो it won't work properly. So in order to work this cell well or salt breach has to be kept in such a way that it has to be deep into the solution in such a way that both ends must dip into the solution. So that is what we can say. This is the salt breach. So salt breach क्या है? It is a U-shaped glass tube filled with a suitable electrolyte solution. Cotton is plugged at both the ends. The choice of electrolyte solution depends upon the substances what we have taken here. Next is what are the applications of this salt breach? It maintains electrical contact with both the solutions. It avoids the mixing of the two solutions. It maintains, it allows the ions to move through it, and it avoids the potential junction. These are the functions of salt breach. What we can have here in this cell. Clear with this? So galvanic cell के बारे में देखिएगा कि what we have seen galvanic cell के बारे में. Number one, construction of galvanic cell. Next is working of galvanic cell. Next is cell representation. Then cell reaction. Cell reaction is also very important. जिसके अंदर half oxidation reaction, half reduction reaction वो आ जाता है, and then overall reaction. And then we are seeing that is what is the salt breach. So this is what we are seeing. Now we have to move ahead for electrode potential and cell potential. उसकी तरफ हमें move करना है. So let's move to that cell potential, electrode potential. मैं एक वर्ड देता हूँ पोटेंशियल. पोटेंशियल अब इसके अंदर दो आते हैं. नंबर वन दैट इज यू कैन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दूसरा
that is you can say cell potential. दो चीजें अलग है. This is electrode potential and this is the cell potential. दोनों में काफी डिफरेंस है. अभी सबसे पहले पोटेंशियल किस तरीके से तैयार होता है ये हमें समझना पड़ेगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल and then we can understand what is the cell potential. That is what we can see here. Clear with this? Now let's go to one thing. ये तो हमें सेल दिखाई दे रहा है, ये पूरे सेल का जो होगा वो अलग बात है, that is you can say cell potential. इस सेल के अंदर दो चीजें होती है. This is half cell, this is another half cell. It is called as, this cell has two different cells, one half cell, this is another half cell. तो दो half cells होते हैं cells के अंदर. So this is a half cell which has oxidation and this is another half cell where the reduction occurs. अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है इसी का एक थोड़ा सा अलग डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा. कौन से सेल में पोटेंशियल डेवलप होता है? We have to discuss the concept of electrode potential. तो पहले देखेंगे concept of electrode potential, जो इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है. ये जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं ये वाला इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट. अब देखिए मैं तीन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ये फर्स्ट कंटेनर है, दिस इज अनदर कंटेनर एंड दिस इज थर्ड कंटेनर व्हाट वी हैव. अभी देखिए दिस इज फिल्ड विद द सॉल्यूशन, दिस इज फिल्ड विद अनदर सॉल्यूशन एंड दिस इज फिल्ड विद अनदर सॉल्यूशन. अब देखिएगा इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग. सपोज दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज CuSO4 सॉल्यूशन एंड दिस इज platinum solution, platinum solution. Here a zinc rod is dipped, here a copper rod is dipped और यहाँ पे platinum plate is dipped. अब देखिएगा this is zinc rod, this is copper rod and this is platinum rod. हमें डिस्कस करना है how the potential is developed, how the potential is developed, that what we discuss. जिंक सल्फेट के अंदर जिंक रॉड डिप किया है, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर रॉड डिप किया है और प्लैटिनम सॉल्यूशंस के अंदर प्लैटिनम रॉड डिपॉजिट किया है. और तीनों केस जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है जिंक हैज द टेंडेंसी टू डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशंस, तो Zn++ तैयार होता है सॉल्यूशन के अंदर. तो सॉल्यूशन के अंदर सारे Zn+ आते हैं. देख ले रहा है जिंक हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म Zn++ + 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो जिंक रॉड है ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो प्रोड्यूस Zn+. तो सॉल्यूशन में सारे Zn+ आएंगे एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द मेटल प्लेट. तो आप देखिएगा जिंक के केस में क्या होता है, मेटल प्लेट्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस सॉल्यूशन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. सॉल्यूशन के अंदर सारे Zn++ होते हैं और मेटल प्लेट्स पे सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मेटल प्लेट हैज अ इलेक्ट्रॉन्स एंड सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज. सो देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल. And this electrode potential is nothing but the potential of the electrode. This difference of the potential between the plate and solution around it. किसका potential difference है? Difference है metal plate और solution around it. इसका difference है. And this difference of potential between the plate and solution around it is called as, you can say, electrode potential. This is called as electrode potential. Same है इधर भी होता है, but इधर reaction थोड़ा उल्टा होता है. इधर reaction क्या होता है, ये जो Cu++ है, Cu++ receives the 2 electrons and produce deposit Cu. तो Cu यहाँ पे आके this plate becomes positively charged and this metal becomes negatively charged, solution becomes negatively charged. तो कॉपर के केस में उल्टा होता है. कॉपर के केस में होता है कि solution becomes negatively charged and plate becomes positively charged. This is very important. Opposite to this zinc, plate becomes positively charged, solution becomes negatively charged. But there is a potential difference. Plate is at another potential and the solution is at another potential. And this is here neither dissolution nor deposition. यहाँ पे होता नहीं, platinum inert metal है. तो platinum inert metal होने के कारण उसके अंदर neither there is dissolution, there isn't any deposition. तो dissolution भी नहीं, deposition भी नहीं. तो यहाँ पे no potential is developed. यहाँ पे कोई potential difference होता नहीं है solution और plate के बीच में, तो कहाँ से potential develop होगा? So in that sense, what we can see here, these are the metals where there is a difference of potential between the metal plate and solution around it. And this phenomenon is called as electrode potential. So difference of potential between the metal plate and its solution around it is called as electrode potential. Clear with this? Now let's move to this called as, you can say, cell potential. Electrode potential, दो electrode. This electrode you can say electrode potential यहाँ पे होता है oxidation का. This is electrode potential.
एंड दूसरा पोटेंशियल होता है रिडक्शन का, तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल. सो दो पोटेंशियल इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. Potential is nothing but the EMF, electromotive force, EMF of oxidation, EMF of reduction. That is what we can see. Or here, when we talk about this cell, we have here cell potential. Or when we talk about the cell potential, we can have your cell potential is considered as EMF of cell. This is EMF of cell, and this is EMF of electrode. Instead of oxidation reduction, oxidation कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे होता है, हमने देखा है. So यहाँ पे एनोड भी आता है. कभी-कभी ऐसा भी कहा जाता है, this is EMF of एनोड, and this is EMF at cathode. ऐसा भी कहा जाता है. तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि व्हाट हैपेंस हियर, EMF electromotive force of oxidation, electromotive force of reduction, that is EMF of oxidation, EMF of reduction. ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, तो इसे EMF of एनोड भी कहा जाता है और EMF of कैथोड भी कहा जाता है. तो EMF of cathode is reduction and EMF of anode is oxidation, which naturally generally occurs. वो होता है. When we talk about the cell potential, तो cell potential is EMF of oxidation plus EMF of reduction, ऐसा होता है. So इस देखिए, this is half cell, this is another half cell. इसको हमने salt bridge डाल दिया, तो we got this salt bridge और ये हमने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल को या वोल्ट मीटर को, तो ये सेल बनता है. ये हाफ इलेक्ट्रोड है, क्या another हाफ इलेक्ट्रोड. हम जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रोड बनता है, ये हमारा सेल बनता है. सेल के अंदर इधर हाफ रिएक्शन है, सेल के अंदर इधर हाफ रिएक्शन है, और इसके अंदर होता क्या है, इस सेल के अंदर दैट इज व्हाट वी कैन से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है, यहाँ पे पोटेंशियल, और दोनों पोटेंशियल का जो सम टोटल होता है जो यहाँ पे दैट इज कैन से EMF ऑफ द सेल. So the potential difference between the oxidation electrode and reduction electrode in a cell is called as cell potential, which is given by this equation. But इसके अंदर एक खास बात होती है. इसके अंदर खास बात क्या होती है, देखिए आप लोग कि this according to IUPAC norm, this is not taken as it is only. इसके अंदर देखिएगा, according to IUPAC norm, suppose zinc है, zinc goes for the oxidation to produce Zn++ plus 2 electrons are left. और वही zinc, this is the oxidation, ये oxidation reaction. वही zinc जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो it becomes reduction. So this is a reduction reaction. इसका मतलब ये है, any metal can go for oxidation and can go for reduction. किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, मेटल का रिडक्शन भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि हमेशा जिंक का ही ऑक्सीडेशन होगा. ये बात ट्रू है. जिंक को कॉपर के साथ कनेक्ट करेंगे तो जिंक विल गो फॉर ऑक्सीडेशन, कॉपर विल गो फॉर रिडक्शन. जिंक और दूसरे किसी के साथ आप लोग दूसरे किसी मेटल के साथ हो सकता है कि जिंक का रिडक्शन हो और दूसरे मेटल का ऑक्सीडेशन हो. सो कौन से मेटल का रिडक्शन होगा और कौन से मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द EMF सीरीज, जो इस चैप्टर के एंड में हम देखेंगे. फिलहाल में इतना याद रखिएगा, एनी मेटल कैन गो फॉर ऑक्सीडेशन और एनी मेटल कैन गो फॉर रिडक्शन. दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. तो होता क्या है कि सपोज जिंक के बारे में, जिंक का हम ऐसा कहते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन उसका पॉजिटिव है, तो बस इसका जिंक का रिडक्शन नेगेटिव होता है. इतनी इंपॉर्टेंट बात. जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और या फिर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. तो वी कैन से इफ EMF of oxidation is negative, then its EMF of reduction is positive. ये होता है किसी भी मेटल के केस. तो in that sense we can have this one. So according to IUPAC norm, अगर हमें ये दोनों को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, दिस इज ऑक्सीडेशन, ओके, दिस इज ऑक्सीडेशन, ये इस ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव तो रिडक्शन नेगेटिव होगा. तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, नेगेटिव EMF ऑफ रिडक्शन प्लस दिस इज EMF ऑफ रिडक्शन. अब देखिए, ये ऑक्सीडेशन कौन सा है, LHS का, ये कौन सा है, RHS का. RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड. सो ये भी क्या है, LHS. ये कौन सा है, RHS का. और मुझे हटाना है तो मैं ये इस तरफ शिफ्ट करना है, तो दिस इज EMF ऑफ रिडक्शन माइनस EMF ऑफ रिडक्शन. अभी ये माइनस इधर किया तो ये LHS और ये कौन सा है, RHS है, एंड दिस इज EMF ऑफ सेल. तो अकॉर्डिंग टू IUPAC norm वी गॉट दिस फार्मूला. हम लोग ये फार्मूला लिखता है, ये फार्मूला की तरफ जाते हैं कि EMF ऑफ सेल, ऑक्सीडेशन तो हम मेजर करते नहीं, हम सिर्फ रिडक्शन के फॉर्मेट में मेजर करते हैं. So all the values we calculate in the format of reduction only, not in the format of oxidation. So that's how we can say here this oxidation has to be replaced by reduction. ये oxidation plus है, तो oxidation plus है तो उसका EMF reduction कैसा होगा, माइनस होगा. तो this oxidation plus is replaced by minus. ये oxidation already left hand side पे होता है, reduction left hand side पे होता है, वो इधर शिफ्ट करेंगे तो this is left hand side, this is. तो अभी ये फार्मूला जो यूज करते हैं
तो पहला जो वैल्यू है हमेशा RHS का होता है और दूसरा जो वैल्यू हमेशा LHS का होता है किसी भी सेल के अंदर। सो ये लिखा नहीं जाता, ये मैं हटा भी दूंगा तो याद रखिएगा कि फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट द RHS एंड सेकंड वैल्यू ऑलवेज रिप्रेजेंट द LHS। तो किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जाता। किसी भी मेटल का रिडक्शन पता है तो उसका ऑक्सीडेशन अपोजिट चार्ज होगा, उतना ही होगा। मतलब मान लो इसका अगर 0.76 है, जिंक के केस में 0.76 होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन प्लस 0.76 है, रिडक्शन माइनस 0.76 होगा। वैल्यू रिमेन द सेम, साइन गेट रिवर्स। So that is what we can see. So this is the potential. So hope everyone got it. Electrode potential and this is the cell potential. What the electrode potential? It is the difference of potential between the metal plates and solution around it. And when we talk about the cell potential, it is the difference of potential between oxidation electrode and reduction electrode. Difference of potential between RHS or LHS you can say, and this difference is nothing but you can say cell potential. So these are the formula numerically हम लोग use करेंगे to solve the numericals. Clear with this? So that's all for today. Thank you very much. See you tomorrow.